हेलो। आज की वीडियो है एक और इंटरव्यू सेशन और आज हम लोग बात करेंगे नीट पीजी 2024 एग्जाम के बारे में। रिसेंटली नीट पीजी 24 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आज हमारे साथ हैं मोहसिन वानी, जिन्होंने सिक्योर किए AR60 इन नीट पीजी 2024 और वो हमारे ही कॉलेज GMC श्रीनगर से हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोहसिन काफी टाइम से मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम सब लोग उससे एक अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आज उनसे बात करेंगे रिगार्डिंग प्रिपरेशन, स्टडी शेड्यूल, प्लान्स, फ्यूचर एडवाइसेस वगैरह वगैरह। तो सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हाय मोहसिन, होपफुली आप ठीक होंगे। तो मेरा सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि इतने बड़े सेलिब्रिटी के सामने आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैं इंटरव्यू में लोगों के साथ ऐसी उल्टी पुल्टी बातें तो नहीं करता, बट क्योंकि मोहसिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो इट इज लाइक फैमिली मेंबर गेटिंग अ रैंक इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप खुद अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिए। I am Mohsin Wani from I have done my MBBS from GMC Srinagar batch 2017. I finished my internship by March 24. Then after a gap of I think 2 months, I gave INA set 24, in which I got a rank of 600 AIR. And then again after a gap of 2 months, I gave this NEET PG 24 and I got a AIR of 60. ठीक है, ये दोनों एग्जाम्स में जो आपने अपनी AR लाई है वो आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में थी। Yes. तो अब नीट पीजी के रिजल्ट के रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले रिजल्ट आने के बाद आपका खुद का रिएक्शन कैसा था, फैमिली का रिएक्शन कैसा था और आसपास के लोगों का, जैसे दोस्त, क्लासमेट्स वगैरह, उनका क्या रिएक्शन था? It was like a shock क्योंकि मेरी जो expectations थी वो that was around this 100 to 200 rank. So when I checked my result, so when it was AR60, I couldn't believe it. So I called you only to check my result. Then हाँ, after that, I asked you many times to check it again, and finally you said that it is 60. Then I told my parents, and वो भी बहुत खुश थे. ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने रिजल्ट चेक करके मोहसिन को फ़ोन पे बताया कि AR60 है और इसने तो फ़ोन काट दिया, बट उसके बाद मैं खुद डबल ट्रिपल चेक कर रहा था कि मैंने किसी और का रिजल्ट तो नहीं इसको बोल दिया, बाद में मार पड़ जाएगी, बट सेम ही था रिजल्ट। आपका रिजल्ट आने के बाद जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी एग्जाम के पहले, उसके कंपैरिजन में ये रिजल्ट कितना डिफरेंट था? एग्जाम से पहले थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो गया था बिकॉज ऑफ रिपीटेड दिस पोस्टपोनमेंट. So I was expecting, actually in reality I was expecting a state rank of about 50 because जो मेरा plan था वो था skills medicine, and if I would be getting state rank within 50 तो मेरा dream branch थी वो मुझे मिल जाती. So but exam day you go with fresh mind, you rule out options, you rule in options, then rest you leave on your God. It just you get an AR of 60 from expectations of state rank 60. I got AR of 60. हाय, यहाँ पर एक छोटा सा एड ब्रेक लेते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, PW मेडेड। PW मेडेड आपकी MBBS की पढ़ाई एज वेल एज आपकी नीट पीजी प्रिपरेशन दोनों ही आपके लिए काफी आसान और सिंपल बना देगा। इसमें आप अपने ईयर और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर या फिर इंटर्न बैचेस में से कोई भी ले सकते हैं, जो कि आपको काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में भी मिल जाएंगे। अब क्योंकि MBBS के फर्स्ट और सेकंड ईयर्स ही फंडामेंटल है, हम इनके सेकंड ईयर एसेंशियल्स बैच को कंसिडर करके इसकी डिटेल्स के बारे में आपको बताते हैं। इसमें पहले तो आपको एक लाइव बैच मिलेगा, सेकंड ईयर एसेंशियल्स बैच। उसके अलावा आपको सभी सिलेबस की कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस और PYQs वाले क्वेश्चन बैंक्स भी मिलेंगे। लेक्चर्स ऐसे डिजाइन किए हुए हैं कि आपको फंडामेंटल नॉलेज तो मिले ही, साथ में साथ आपकी सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज भी बढ़े। बैच में फर्रे क्लासेस, रैपिड रिवीजन वीडियोस और टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। और क्योंकि इनका टीचर्स डे ऑफर 5 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, ये सब आपको मिलेगा एट जस्ट ₹5000। और अगर आप मेरा कोड निहायत यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 5% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और बाय द वे, ये कोड सेकंड ईयर के साथ साथ बाकी सभी बैचेस और सब्सक्रिप्शन पर वैलिड है, तो आप वहां भी कोड यूज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पहला लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट करो। हम बाकी वीडियो पे वापस आते हैं। तो इसका मतलब है जब आपने फिर एग्जाम दे दिया होगा, एग्जाम देने के बाद आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग गया होगा कि जो मैंने सोचा था, जो वर्स्ट मैंने सोचा था, उससे काफी बेटर मैंने परफॉर्म किया है और कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छा ही होगा। Yes, yes, 100%. ठीक है। अब क्योंकि इस एग्जाम में आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप इस एग्जाम के एक एक्सपर्ट कंसिडर किए जा सकते हैं। तो आप हमें इस एग्जाम के बारे में कुछ बताइए, इसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, किन लोगों को देना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ब्रीफ में। NEET PG 24 is actually your door of entry into the field of medical science. I think MBBS जो है is actually we are actually kindergartens trying to understand ABC of the medical field. So if you want to pursue your higher studies, you have to give one of the entrance examinations, maybe it INSET or be it NEET PG 24. So NEET PG 24 is basically it comprises of 19 subjects which actually we read throughout 4 to 5 years, and इसमें भी वेटेज होती है, like some subjects
दे आर प्रेफर्ड मोर, जिनसे बहुत सब्जेक्ट्स बहुत क्वेश्चंस आते हैं. एक्चुअली आइडियल टाइम फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस नीट पीजी इज अबाउट 6 to 8 months. ठीक है, तो अब आपने अपनी फील्ड ऑफ चॉइस जिसको आप लेंगे उसके बारे में बता दिया कि स्किम्स में मेडिसिन आपका इंटरेस्ट है, तो उसके बाद आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं लाइफ के रिलेटेड? मेरा फ्यूचर प्लान है स्किम्स मेडिसिन. एक्चुअली उसके बाद मेरा प्लान टू डू ये है कि टू डू डीएम इन कार्डियो. आई एम इंटरेस्टेड इन कार्डियो. अब क्योंकि आपने बताया कि आपने इस साल के आईएनए सेट एग्जाम में भी अपेयर किया था और उसमें भी आपने आउट परफॉर्म किया है, नीट पीजी में भी आउट परफॉर्म किया है, तो कैसे आपको लगता है ये दोनों एग्जाम्स डिफरेंट हैं, किसके लिए कौन सा बना है और क्या ब्रीफ है इस एग्जाम के बारे में? एग्जाम के हिसाब से उतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ी स्ट्रेटजी में डिफरेंस हो जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम सिलेबस पे आप प्रिपेयर कर रहे हो. मतलब आई थिंक कि मतलब यूजुअली आईएनएस सेट होता है वो ट्वाइस अ ईयर एग्जाम चलता रहता है. एंड नीट पीजी जो है वो दैट इज ओनली वंस अ ईयर. आई थिंक एनी स्टूडेंट जो भी प्रिपेयर कर रहा है नीट पीजी 2024, which who should actually prepare for the INSET beat, like अभी कोई स्टूडेंट 19 बैच to 18 बैच जो कि अगले साल के 24 के लिए 25 के लिए प्रिपेयर करें, दे शुड गिव INSET दिस नवंबर, एंड दे शुड गिव INSET 23, बिकॉज एक्चुअली आप एक और क्रिएट करते हो खुद में, क्या है टू प्रिपेयर, देन एग्जाम स्ट्रेस आ जाता है, देन 10 डेज का इट ब्रिंग्स यू एक्चुअली डिसिप्लिन, जो कि अगले असली एग्जाम में मतलब बीट मे बी योर टारगेट नीट, but you should give them all. Now, regarding difference of exams, I think in INSET, first and second year subjects are highly preferred in the INSET. And NEET PG, less preference is given to the first and second year, more preference to the clinical subjects. But regarding syllabus, I think a student who is preparing for NEET PG, he should actually appear for INSET. कैसा भी हो क्या हो, but kind of इसमें जो प्रिपरेशन आप करते हो, मतलब आपको पता चल जाती है कि कहाँ पे मतलब लैक्यूना ना रहते हैं, हाउ के इट कैन बी इम्प्रूव. ऑन एवरी एग्जाम इज एक्सपीरियंस. यू बेटर लर्न देन यू लूज इन गिविंग एग्जाम. ठीक है, अब क्योंकि हम लोग नीट पीजी एग्जाम के बारे में डिटेल्ड बात करने वाले हैं, तो उसी से स्टार्ट करते हैं. आपने कब से अपनी डिटेल्ड प्रिपरेशन स्टार्ट की या डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट की कि अब नीट पीजी के लिए प्रिपेयर करना है, और किस तरह से स्टार्ट की? जो मेरी नीट पीजी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, इट बिगिन अराउंड मार्च, एंडिंग मार्च, जब से मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई. आई विल से अप्रैल, क्योंकि इनिशियल 10 to 15 डेज वो आप ये स्ट्रेटजी बनाते हो क्या करना है क्या नहीं करना है. एंड आई थिंक जो अर्ली एंट्रेंस एग्जाम है जो मेरा अपना खुद का है, कि मतलब प्रिपरेशन जो ड्यूरेशन इट शुड बी 6 to 8 months. बट इनिशियल 6 to 7 months जो मैंने यूज किए, आई मेनली यूज टू कंसोलिडेट माई इंफॉर्मेशन, लाइक आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट 1 2 month. अगर मुझे आखिरी में एक मंथ भी मिलता है, 15 दिन मिलते हैं, मतलब आई विल रीड जस्ट कंसोलिडेट मटेरियल, आई विल कीप सम थियरी इन माई फ्रेश सो एज टू अपीयर ऑन एग्जाम. अब जैसा कि आपने बोला कि 6 to 8 मंथ्स के लिए आपने एग्जाम के लिए डेडिकेटली पढ़ना शुरू किया, लेकिन इससे पहले जो आपका एमबीबीएस का टाइम होगा उसमें भी आपने काफ़ी अच्छे से अपनी कंसेप्चुअल किताबें या वो सारी चीज़ें प्रिपेयर की होंगी, तो कैसा रहा था आपके एमबीबीएस के 4 साल और इंटर्नशिप में आपका शेड्यूल पढ़ाई के रिलेटेड इन जनरल? MBBS में I think leaving initial 3 4 months, then rest of my MBBS I did it properly, not to prepare for the entrance, but to be a good doctor, good practitioner, whatever you say. जो मेरा स्टडी आवर होता था रूटीन में, अगर मैं एवरेज उसका निकालूं, इट वाज अबाउट 5 to 6 hours per day on an average. और मेनली आई यूज स्टैंडर्ड बुक्स, क्योंकि आई थिंक you lay a strong foundation, you understand things properly from the standard books. And maybe जहाँ पे भी मैं अटक जाता था या मतलब मुझे समझ नहीं आता था, I would use resource like हमारे टाइम पे we used to use this डॉक्टर नजीब selectively. I would use that quickly, और 2.2x पे जहाँ पे भी मैं मतलब मुझे लग रहा था कि मतलब ये समझ नहीं आ रहा है या गाइडन पे ये समझ नहीं आ रहा है, then I continued the same through second year. Then only in third year, I would say pre-final, I this switched to the this review books. I didn't read any standard for the pre-final. Then again for the final, like medicine, surgery, pediatrics, or even I would say obs-gynae, I read this main like Harrison, Bailey, and this guys, OP guide. Yes, I didn't read any minor subjects in my this during my MBBS, only the major portions. And my जो study pattern होता था, it was parallel to the clinics. Whatever I would see in the ward in daily basis, I would read that. I would make sure I am understanding, I am reading that, because you try to integrate the things. ठीक है, तो अब आपने क्योंकि स्टडी मटेरियल के बारे में बात कर ही दी है, तो आप हमें डिटेल में बताइए एक एक ईयर का. सबसे पहले फर्स्ट ईयर के टाइम पे आपका क्या स्टडी मटेरियल था, क्या बुक्स आपने यूज़ की थी और क्या क्या रिसोर्सेज आपने यूज़ किए?
फर्स्ट ईयर में फर्स्ट जो हमारा वो आई विल से हॉरर होता है वो एनाटमी होती है, बिकॉज सडनली आपको इतना मतलब इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है एंड स्टूडेंट ऑफन कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब याद क्या करना है और समझना क्या है. दैट आई वुड से फॉर द एनाटमी. I used BDC mainly only in pelvis, or I would say abdominal pelvis. I read from this Greece anatomy. I try to understand anatomy. तो जितना मुझे understand हो पाती थी anatomy, I try to understand. But rest on under whatever I used to understand, फिर उसमें आपको याद भी करना पड़ता, लेकिन आई वुड मेक इट श्योर कि मतलब जो मैं याद कर रहा हूँ थिंग्स, बिकॉज उसमें मेमोराइजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. बट इनिशियली थोड़ा अंडरस्टैंड होना चाहिए, देन आई वुड ट्राई टू मग अप द थिंग्स, क्योंकि आई एम नॉट कंपेटेबल विद memorizing things. I get irritated with that. Then second, for example, neuroanatomy. I read this that Inderbeer Singh, Inderbeer Singh's book. But I used to attend those dissection. I used to understand those sections in the dissection hall only. Then I had some trouble with the issue with an neuroanatomy initially, but later on, I will say that wherever I used to stuck in neuroanatomy, I used to watch Dr. Najib, maybe on YouTube or maybe, and I used to clear the things there only. And on that YouTube videos, I also used selected YouTube videos to understand those sections, because I used to like that. I try and I would make it sure that I am understanding things. Then regarding physiology, I think I read both Guyton and Ganong. Guyton was my main primary source. In Ganong, from Ganong, I read this, especially two chapters, CNS and this endocrinology. I did from the Ganong, I think. Then I would recommend to read CNS endocrine from Ganong as well. Then regarding biochem, initially I bought this Lipin code, but my seniors told to read Satyanaran, you would fail. But I couldn't understand that much Satyanaran, so I again bought this Lipin code, and as much as I could understand, I would read that. But I didn't read biochem that way. जितना मतलब मैं पढ़ पाता था उतना मैं पढ़ता था. But mainly I read properly these two, anatomy and mainly physio, because I would say physio, read it properly. Then because आपका जो second year पे I would say pathology and pharmacology, it's directly dependent on the first year's physiology. अगर आपकी physiology clear नहीं है, you won't be understanding anything. Pathology and pharmacology की तो बात ही नहीं. Then in pathology, I read this Big Robbins only, which is actually I think my second favorite book of the MBBS syllabus. Then it's a beautiful book. My main focus not to read the microscopy of each and everything. I used to read the things in a clinically oriented manner. Like I used to read to renal. I used to try to understand whatever I could understand, but mainly thaki, how does the glomerular disease present? What are the different types of differentials you would make? Microscopy में उतना ध्यान नहीं देता था second year में. And then regarding pharmacology, I read this Goodman and Gilman. Initially, I had trouble कि कौन सी book choose करें. I initially bought Cadson, then I bought KDT, then I again bought, then next I bought the this क्या कहते हैं, so Goodman and Gilman, क्योंकि I think Goodman and Gilman, I think this is a book which I think satisfied me, क्योंकि उसमें डिटेल लिख के, बट आई थिंक सेकेंड ईयर स्टूडेंट को वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि our this understanding of the things is not that much vast at the time, क्योंकि जो गुडमैन गिलमैन क्लियरली एक्सप्लेन करती है थिंग्स को, लाइक हार्ट फेलियर ड्रग्स, इनिशियली एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी, देन एडेड द, एंड फार्माकोलॉजी में इट्स इंपॉर्टेंट टू रीड द थिंग्स रिपीटेड. गुडमैन गिलमैन, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें अगर ड्रग है फ्लूटिकेसोन, इट रिपीट इज द सेम थिंग इन वन पेज, आई थिंक 10 to 12 टाइम्स, एंड इट एक्चुअली इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज यू रिमेंबर द ड्रग बाय दैट. फिर एंड पे आपको रिपीटली याद करने की जरूरत नहीं है. Then in microbiology, I read Javet's. Javet's is a book which actually I was compatible with. Then regarding FMT, I didn't read FMT properly. I used to read this was only before 2 days before the exam. अब आपने हमें अपने एमबीबीएस के बुक सोर्सेज के बारे में बताया, और एक ऑब्वियस है कि आपने सबसे ज़्यादा अच्छे सोर्सेज, गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स, इन सारी चीज़ों पे पूरे एमबीबीएस में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, जो एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट करता है उससे कई ज़्यादा. अब जो आपने अपना एग्जाम खत्म कर दिया, आपका एमबीबीएस खत्म हो गया, आपने आउट परफॉर्म किया है, तो आपको क्या लगता है जितनी आपने एक्स्ट्रा मेहनत की थी वो वर्थ इट थी, उसी से आपको एज मिला, या फिर उनमें से कुछ चीज़ें अननेसेसरी थी जो अगर नहीं भी करते तो ठीक रहता? It's it's a $100 question. I think which you asked कि
जो मैंने स्टैंडर्ड पढ़ा था कि वो इसमें हेल्पफुल हो बाकी में। जो रिसेंट पेपर्स होते थे नीट के, आई थिंक अगर आप वैसे बात करोगे तो स्टैंडर्ड्स की आई थिंक कि उतना ज्यादा हेल्प नहीं करते एग्जाम के लिए, क्योंकि देवर मोर लाइक ऑफ, जो मैंने रिसेंट पेपर्स देखे प्रीवियस है, मोर लाइक ऑफ वन लाइनर, those core portions of the disease which are better, this job better रिव्यू बुक से कर पाते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने स्टैंडर्ड नहीं पढ़ेगी तो रिव्यू बुक्स डायरेक्टली ऐड करोगे, स्टैंडर्ड्स उसमें भी हेल्प करते। बट जो रिसेंट नीट 24 हुआ था, इट वाज मोर लाइक a clinical oriented, like I was happy with that क्योंकि there were questions asked on the auscultatory findings of a pneumonia, there were questions asked on the lot of clinical questions were there, I'm not remembering each and every question, बट उस एग्जाम के लिए आई थिंक मुझे बहुत हेल्प मिली फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स। एंड इट वाज इन माय माइंड कि अगर मैंने स्टैंडर्ड्स इतनी पढ़ी है, वन डे दे शुड कम इनटू माय रेस्क्यू। एंड आई थिंक yes, they helped a lot because I think paper was not that rote based, I think paper was clinical, and many of questions that I answered was mainly because I had answered those things in rounds। जो मैंने लॉट ऑफ क्वेश्चन वर देयर जो मैंने राउंड्स में आंसर किए, एंड तब जाके मुझे अंडरस्टैंड, तब जाके मुझे वो मेमोराइज हुई थी, एंड देन आई कुड आंसर देम ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो अब आप राउंड्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने अपनी पूरे एमबीबीएस में थ्योरी क्लासेस के साथ साथ पोस्टिंग्स को भी इंपॉर्टेंस दी है और रेगुलरली पोस्टिंग्स अटेंड की है। फ्रॉम माय सेकंड ईयर आई थिंक आई यूज्ड टू अटेंड द पोस्टिंग्स, क्योंकि सेकंड ईयर में ही आपके राउंड्स स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज आई थिंक सेकंड ईयर स्टूडेंट ही शुड गो द वार्ड्स डेली, दो राउंड्स नहीं होते हैं सेकंड ईयर में। बट मेरा था कि मतलब इफ आई एम सीइंग अ पेशेंट लाइक सीओपीडी, लाइक सीओपी, मतलब आप एक पेशेंट को देख रहे होते फ्रॉम फॉर फर्स्ट टाइम इन अ वार्ड, जो कि सांस फूली हुई है, जिसकी लिप्स ब्लू होते हैं, जो आपको हंचबैक पोजीशन, जो आगे पोजीशन में बैठा हुआ है, एंड यू देन एग्जामिन द पेशेंट, आप उसकी ऑस्कल्टरी फाइंडिंग्स लेते हो, देन टीचर उस पर डिस्कस करता है, आपकी दिमाग में इंप्रेशन पड़ जाता है डिजीज का। देन यू वांट टू, इट एक्चुअली इट ब्रिंग्स अ फायर इन यू कि आप लेटर ऑन घर पे इसकी, यू वांट टू गो इनटू द कोर ऑफ दिस। सो आई वुड ओपन द बुक, आई वुड रीड द पैथोलॉजी ऑफ द डिजीज, बिकॉज ये कुछ इसमें आई थिंक देयर इज इंटीग्रेशन ऑफ द थिंग्स, इंटीग्रेशन ऑफ थिंग्स हो जाती है, लाइक एंड आई यूज्ड टू अंडर थिंग्स प्रॉपर्ली, एंड आई वांटेड टू, वो मुझे मतलब प्रमोट कर दी कि आई वांट टू गो इनटू द पैथोलॉजी ऑफ द डिजीज। आई थिंक जो दूसरा स्टूडेंट, आई विल कंपेयर इट विद स्टूडेंट जो पोस्टिंग नहीं जाता है, then he has to imagine a lot of things, and I think MBBS is such a course where you should not rely on imagination, like in 11th and 12th, whatever we read, we try to imagine things. Let's throw a ball at a speed of this, let's throw a ball. Here I don't think you should imagine much, rather you should see the things in your world, then try to read around things, because even if you're not a proper reader, let's suppose even after you read that thing months later in the second year, that patient is still in your mind, and you want to, whatever you read, you have a better understanding of the thing. So yeah, I think words are the things which made me to read the things. Then in the pre-final and final year, going to the rounds is very helpful. There occurs a lot of discussion, and even if you're listening passively in the round, that adds to your. And even if you're interested, like you answer the properly, then the teacher also shows interest in you, and they repeatedly ask you questions. I used like in pre-final final year, I used to go to the rounds daily, and often of times I used to answer to the teachers, and that brings a discipline in you as well, because teachers show interest and you want to read more and more. And another thing, important thing is you become a type of competitive person, like you want to answer most of the things, you try to make your impression in the teacher, and that competitive thing, I think it should be present in a MBBS student. That competitive thing should be present, I think, in PG as well. I don't know how it will go, but for an MBBS student, that competitive thing brings a discipline in you. ठीक है, तो अब मैं आपसे नीट पीजी के रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछूंगा। पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने नीट पीजी के रिलेटेड कोई स्पेसिफिक बुक्स, सोर्सेज या सब्सक्रिप्शंस यूज किए थे अपनी जर्नी में? नीट PG 24 के लिए आई थिंक आई यूज रिव्यू बुक्स, I used my notes, because whenever I used to read any standard, I would write, at least I would write some 10 to 20 things of a particular page, ताकि मुझे फिर से ये पेज ना पढ़ना नहीं चाहिए. Then review books,
then the subscription that I used वो आप ही की subscription थी PW Med की. And second year, I think there were some lacunas in me. I knew them. Like I told you that I didn't read microscopy in my second year. So microscopy was an issue, which I cleared from PW Med, Ranjit sir. Then in this microbiology, again there was an issue with me, especially in mycology. I couldn't understand mycology. That there are questions asked on the angles of the fungus. Right angle पे है तो mucor है, 60 degree पे है तो aspergillus है, and there are a lot of questions asked frequently. I did mycology from the Mamta Java, and even parasitology I did from the Mamta Java map. Then this anti-cancer was always a troublesome for me. Anti-cancer and monoclonal antibodies I did from PW method only, and that was your subscription only. Then I used review books, and my main focus was to build around just around the PYQs and PYTs. I had a checklist of PYTs, which was in my phone. And after reading a particular, for example, I am reading a surgery subject, I would see all the PYQs. I would read that portion from one or other review book or one or other notes, and I used to compile the things in my notebook. And I made a notebook of 500 to 600 pages, which actually later helped me because once you have a compilation of the things, it becomes later on easy. ठीक है. एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस का आपका क्या पैटर्न रहता था? Exam related questions, initially I purchased the DAMS DQB hardcore book because throughout my MBBS I had relied on the hard copies of the things. I wasn't well acquainted with using this mobile or tabs which most of us present use. मुझे उससे हिसाब नहीं आता था. So again, for question bank, I purchased the books, which is actually rare, which no one does. But I think when I was doing that's also a good source. But I think जब मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता था, that उससे मुझे वो ignition नहीं मिलती थी कि I have to add my notes, I have to change, I have to add my information, because already there is so much of information. How much information you can add? So I was quite confused, quite a bit confused initially. So I purchased this Reflex app, which is a beautiful app, which is you should give credit to the Dr. Aditya sir, who has created this app. There are around 6 to 7,000 questions there, and they are all PYQs. There are some issues with some questions, but 80 to 90% of the Reflex app is a I think good explanation. Somewhere there are also audio explanation of the questions. I mainly for my main question bank was Reflex app, and I purchased this subscription of the Reflex app twice. तो अब जब एग्जाम नज़दीक आया तो लास्ट के 10 डेज में आपका प्रिपरेशन का क्या प्लान था, क्या स्ट्रैटेजी थी? My last 10 day preparation strategy was कि एक बार तो रीड होना चाहिए for of 70 to 80%. अगर 100% सिलेबस नहीं कवर होता है, at least 70 to 80% रीड तो मुझे होना चाहिए. So what I told you in the beginning that I made a notebook of 500 to 600 pages, which was actually a compilation of all the different sources जो भी मुझे लग रहा था important, and important कौन लग रहा था on the PYQs. तो मेरी कंपाइलेशन एक थी नोटबुक की, उसमें मैंने एक ही जगह पे सारा लिखा था. लाइक इफ आई एम रीडिंग टॉक्सिन्स ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी, I would compile all the toxins of the bacteria in one page. If I am reading scores in surgery, I compile all the scores on one page. So that compilation notebook I read in the 7 to 10 days, which helped me a lot because the questions I saw on screen, I could see them better on the screen, which I read in the 7 to 10. ठीक है मोहसिन, अब जैसा कि हम सबको पता है कि नीट पीजी एग्जाम लास्ट मोमेंट पे पोस्टपोन हो गया था अपने पहले टेंटेटिव डेट से, तो आपने इस पोस्टपोनमेंट को किस एंगल में लिया और फिर आपने इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया? I think postponement was actually a greatest disaster in the whole preparation period. It was क्योंकि जो postponement हुई, it was about 10 hours away from the exam. And जो मेन स्ट्रेस होता है यानी मेडिकल एग्जामिनेशन का, वो इन्हीं लास्ट के 10 to 12 डेज में होता है, क्योंकि कवरिंग द सिलेबस इज द मोस्ट हेक्टिक पार्ट रादर देन टू अपीयर इन द एग्जाम, if you compare. Then for a week I could not read. For 1 to 2 weeks I could not read. Then notice came. There were about 4 weeks again. Then I again took the subjects which maybe there was some weakness, so I tried to cover them. Then again in the last 10 days I made sure to see the things once again. अब वापस एग्जाम के क्वेश्चंस पे आते हैं. जो मॉक टेस्ट होते थे उसमें जब आपके स्कोर्स आते थे तो आप कैसे एनालिसिस करते थे, अपनी मिस्टेक्स पे इम्प्रूवमेंट कैसे करते थे और फिर नेक्स्ट टेस्ट के लिए क्या आपका अप्रोच रहता था? जो मेरा एवरेज स्कोर है, एवरेज रैंक, आई वुड से 400 to 500 रही है
or sometimes it was about 300 rank, or sometimes it was as low as this 2800. Yes. और जो मेरे एवरेज करेक्ट होते थे, it was about 140 to 150 questions. And after exam, uh, after 3 to 4 days, I used to analyze the paper, because I used to give exam on let's suppose last day of the scheduled time of the exam, after 3 to 4 days, and I used to check was the wrong question which I did, where I did the wrong, what are the my wrong questions. And then I used to go to the things where I have somehow made this what we call as rolling in, rolling out option, and then in a quick go I used to see those questions which I have done correct, and I would split the GT analysis over 2 to 3 weeks, because I had to give the next test after 3 to 4 weeks. And I used to make a mistake notebook as well, where I used to write all the mistakes where I have done. And while going to bed, or whenever I used to feel there is some free time, I used to read those questions again and again. तो एग्जाम रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे फिलहाल के लिए हमने पूछ लिए हैं। अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं जहां मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको आंसर करना है इन 1 सेंटेंस और लेस। पहला क्वेश्चन, योर फेवरेट सब्जेक्ट इन एमबीबीएस? Medicine. द सब्जेक्ट यू डिसलाइक द मोस्ट? PSM. बेस्ट एक्सपीरियंस इन योर कॉलेज लाइफ? I think when Nihayet Farooq joined the medical college. Most remarkable moment in your clinical postings? I think in pre-final we were doing a discussion on some cardiac case. Then I gave some good answers, and next day this Khawar sir gave me a CMDT book as a gift. ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है क्योंकि हर कोई टॉपर नहीं होता। जो स्टूडेंट्स करंटली अभी मेडिकल कॉलेज में हैं और उन्हें डिफिकल्टी हो रही है पढ़ाई और अपनी बाकी लाइफ को मैनेज करने में, उनके लिए क्या एडवाइस है? I think study should be balanced in a medical college, and you should not read that much कि आपका brain stress बढ़ जाए, and you shouldn't read that much कि आप डफर बन जाएगी, because if you my senior used to tell me, if you read much it would take toll of your health, mental health, and if you read less it would take toll of a patient. You have to do balance work in both ways. ठीक है, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा पॉइंट आपने बोला है, जो काफ़ी लोग इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट चीज़, क्या लगता है एक सिंगल पर्सन जिसने आपको सबसे ज़्यादा इस पूरी जर्नी में अगर हेल्प किया हो तो वो कौन होगा? I think Nihayet Farooq. 99.9% contribution of my success goes to Nihayet Farooq. ठीक है, ठीक है, मुझे खुद तो नीट पीजी का नहीं आता है, बट समहाउ मैंने किस तरह मोहसिन को हेल्प कर दी है नीट पीजी क्रैक करने में। लेकिन ऑल जोक्स असाइड, अगर सीरियसली इस चीज़ को देखें तो एक सिंगल पर्सन जिसने मेरी एमबीबीएस जर्नी में, क्योंकि मैं तो मोहसिन से काफ़ी जूनियर हूँ, जिनने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया है, एडवाइसेस दी है, और जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके पूछता हूँ और सारे जेन्युइन कंसर्न्स बताता हूँ, और जो मैं सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, इवन पढ़ाता भी है छोटे से छोटे टॉपिक्स, बड़ी से बड़ी चीज़ें, तो वो मोहसिन है। तो अगर मैं जो भी अभी अपनी एमबीबीएस जर्नी में कर रहा हूँ सारा मोहसिन की बताई चीज़ों पे कर रहा हूँ, तो बिग प्रॉप्स टू हिम एंड थैंक्स टू हिम। ठीक है, मुझे लगता है जितनी भी सारी चीज़ें थी जो हम स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को नीट पीजी एग्जाम के बारे में बता सकते थे, आपकी वैल्यूबल्स दे सकते थे, वो हमने कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स को आपके सजेशन से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और वो एग्जाम में इंप्रूव कर पाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you. What just happened?